Acha, in today's class, I will be discussing with you linear search. And basically, linear search is an example of a searching algorithm. When you want to search for values into a given list, or it's simple like you are searching for a value or a name given in a list. So when it comes to a linear search, this is basically an example of a search that is used to check if a value is stored in the list or not. And it do that by working through the items in the list. This basically means like, for example, if you have a list of names, for example, on number one, you have Ali, then number two, you have Mr. Ahmad, then number three, you have Sarah, and on number four, you have Fatma. So in this list, when you want to search for a specific value, for example, I'm looking for a name that is Abira that has to be in this list. But when this name is not found here, it is going to return you false because this list does not contains any name like Abira. Similarly, if I ask you that I am looking for a name Sarah in this list and Sarah already is in there in this list on number three. So this is going to give you the exact value that your designated name or the name that you are finding is at on number three in this list. This is the basic idea for a linear search. You know what this linear search do? This linear search basically inspects each element in a list in turn to see if the item matches the value or not. For example, if I am searching for Abira, this is going to look for the value on number one. Is on number one is the value Abira? No, it is not. Is the value Abira on number two? No, it is not. Is the value Abira on number three? No, it is not. Is the value number four Abira? No, it is not. Similarly, when I just search Sarah on this list, this is going to look for this specific element into this list of numbers. For example, it is going to find that if Sarah is and the first in the first bar, no, it is not. It is containing Ali. Then I'm going to check if it is in the second serial number. No, it is not. And then third area matches that both of the values are same. So it is going to output you that value that Sarah is in this list or number three. So I can use this linear search, for example, when searching for a name in a class list of students' name. So, do you have any queries still here? Linear search में कोई problem? सर Simple. एग्जाम्पल दोबारा समझा दें, एक दफा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा था. Beta, example means that I am searching for a specific name in a class list of students.
what is going to be a class list of students? For example, I am having a list of students, and the list of students into my class are such as I have Mr. Ali, I have Mr. Ahmed, I have Mr. Faraz, I have Miss Sara, I have Abira, and I have another name such as Laila. Now, this is basically a list of students into my class that is being represented by a serial number. What it is to be noted as, you can call it as a serial number or you can call it as a index number. What is it? It basically provides you with a unique value for each number. For example, on number one, you have the name as Ali. For example, number two, you have the name as Ahmad. This is the unique number. And what is this? This is the names. Any confusion till here? No. The next thing that we need to discuss is that now I asked Abira के बेटा मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, इस पूरी लिस्ट के अंदर से मुझे ये बताओ कि क्या इस लिस्ट के अंदर अबीरा का नाम मौजूद है या नहीं। तो सबसे पहले लिस्ट का क्या आइटम चेक होगा? सबसे पहले नंबर वन आइटम चेक होगा, क्या यहाँ पे नाम है? नहीं है। फिर हम आ जाएंगे सेकंड पे, सेकंड पे चेक होगा क्या है? नहीं है। फिर थर्ड पे चेक होगा क्या यहाँ पे है? नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। फिर आपके पास बेटा फोर्थ पे चेक होगा कि यहाँ पर है, यहाँ पे भी नहीं है। इसी तरह जब फिफ्थ पे आएगा तो जो आपने सर्च किया था वो यहाँ पे मैच होगा। तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा? आपके पास आउटपुट आएगा कि द नेम अबीरा वॉज फाउंड एट इंडेक्स नंबर और द सीरियल नंबर 5। That's simply like you are searching for a name, you are searching for a title in a list. Any confusion in this? No. All clear till here? Yes. A search used to check if a value is stored in the list or not. That's what I was doing here. I was looking that if the value Abira was stored here or not. It inspects each element. Yes, it inspect means के एक एक आइटम को चेक कर रहा है कि क्या वो आइटम यहाँ पर आपके पास अवेलेबल, मतलब चेक हो रहा है या नहीं, मतलब वो आइटम उस जगह पर मौजूद है या नहीं। आगे चले। जी। Now let's discuss the pseudocode of this linear search. Output enter नेम टू फाइंड। सबसे पहले तो वो अपना नेम एंटर करेगा ना यहाँ पे, उसके बाद इनपुट आ गया नेम, फाउंड is initially set as false, the counter is going to be 1 and repeat if name is equals to student names counter, then found is true
else counter should be counter plus 1. सर हम स्टार्ट में काउंटर 0 नहीं करेंगे? अभी मैं ये कंप्लीट कर लूं फिर तो पूरा वन लाइन बाय लाइन समझाता हूँ. And if until found or your counter is greater than class third. अच्छा, इसके आगे भी कोड है तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ. If found, then output name found at position counter uh, output name. Okay, so let's check this code. Beta, first of all, for linear search, the first thing that I have done is that I have written here enter name to find. सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप अपना यहाँ पे नेम लिखो जिसको हम ढूंढ रहे हैं. ठीक है, वो तो आपको पता है कि यूजर को बताने के लिए होता है कि दिस इज द नेम दैट आई एम लुकिंग टू फाइंड. द सेकंड थिंग इज दैट I have written here input name. That means that now at this point, the user is going to enter the name he is going to search for. Then the third thing is that I have declared the found as false. Now you need to understand that in some pseudocode questions, the first thing you are going to do is you are going to declare your found as false in the starting of that. Why is that? Because initially when we are running the code, our purpose is not yet completed. This is why we assign it as false. False इस वजह से assign करते हैं क्योंकि कोड अभी शुरू हुआ है और उसका जो मकसद है वो अभी पूरा नहीं हुआ है. जैसे कि यहाँ पे मैंने फाउंड इज फॉल्स इस वजह से किया है क्योंकि अभी तो मेरा सर्च शुरू हुआ है ना. जब सर्च खत्म हो जाएगा तब इसको मैं ट्रू करूंगा. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, जी काउंटर 0 की जगह हम फाउंड को फॉल्स कर देते हैं इसमें. बेटा काउंटर को हम फॉल्स नहीं कर सकते. काउंटर इज बेसिकली अ नंबर that goes like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. True and false is a boolean data type. That means कि उसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, या तो yes या तो no, या तो true या तो false. तो counter can never ever be set as false because counter means to count the number of values. You need to take another variable and you need to assign it to false. काउंटर फॉल्स नहीं हो सकता कभी भी. काउंटर बेटा गिनती गिनने के लिए होता है. अब देखो यहाँ पे हमने काउंटर अपना किया है 1. नाउ इफ यू विश you can make it as 0 as well. It totally depends on you.
जैसे कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि फाउंड मैंने फॉल्स किया है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है अलग से, एंड देन आई हैव this variable is basically known as flags. A flag means that if that work is done, then it is to be known as true. If that work is not done, that means that then it is to be known as false. Right? यहाँ तक कोई Yes. प्रॉब्लम? नहीं. इसके बाद बेटा I have started the loop that is repeat. This loop is starting from here and it is going till here. This is your repeat until. That means that अगर आपका नाम, जो वैल्यू आपने यहाँ पे नेम के अंदर एंटर की थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नेम में क्या एंटर किया था, अबीरा, यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ समझाने के लिए। अगर वो नाम स्टूडेंट नेम की लिस्ट के अंदर हो, स्टूडेंट नेम की लिस्ट कहाँ है, ये रही, इसका नाम क्या है, स्टूडेंट लिस्ट के अंदर हो और उस पे कोई काउंटर चल रहा हो, अबीरा किस काउंटर पर है, 5 पर है। अगर ये सिचुएशन ट्रू हो जाए, अगर जो नाम आप ढूंढ रहे हो, इफ द नेम दैट यू आर फाइंडिंग राइट हियर इज इन दिस लिस्ट, then what you have to return, you have to return as true. And just in case if Abira is not found, then what you need to do, you need to increment a value in counter. That means that I am searching for Abira and Ahmad. So for example, if I have found Abira, so it's done. Now on the second number that I am finding is Ahmad. So then counter plus 1 counter इस तरह चलेगा. Are you getting it? Yes. काउंटर को आसानी से समझने के लिए, अगर आपके पास घर में तस्बीह का काउंटर है, मतलब हमारे पेरेंट्स के पास होता है, वो बटन दबाते हैं ना, वो आगे नंबर चलता रहता है, उसको उससे याद रखा करो, इट्स लाइक अ सिंपल काउंटर जो सिर्फ वैल्यूज को इंक्रीमेंट करता है। और ये कब तक चलेगा, जब तक आपका फाउंडर और काउंटर जो है ग्रेटर देन द क्लास साइज। अब काउंटर बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास काउंटर चल रहा है 7 और क्लास साइज आपके पास क्या है, इस लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स कितने थे, 6। सो if the list is, the number of students in the list are 6 and you are finding the 7th student, this is not possible, right? तो यहाँ पे ये रुक Yes. जाएगा। समझ आया? जी. चलो, और अगर मिल गया, if found, then you need to output whatever the value is in your name, and whenever you see these inverted commas, this means that these are sentences that come as it is. These are basically for your understanding. So this is going to be like, इसको मैं जरा यहाँ पे आसान करके लिख रहा हूँ, ये आएगा इस तरह, नेम के अंदर क्या था, अबीरा, अबीरा, ये तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, फाउंड एट पोजिशन, and what is the counter for Abira? This is 5. The value that is in the counter is 5, comma, and again inverted commas in the list. So this is it. This is going to print this. And just in case if that name is not found, then it is going to output the name, like for example, Mustaq not found, and if. So do you have any queries in this? No. All clear? Yes.